question together. If you have solved this, very good. If you haven't solved, solve with me, okay? Rest of the questions. This question is from the paper that I sent you to solve it in the recent questions, okay? So just quickly go through this source B and we'll start, okay? Got it? So what we have is basically a May-June 2023, one of the recent papers, okay? So very important, make sure remember this question. Might be similar type of question coming in this May-June 2024. So May-June 2023 paper 4.1 and 4.3. The good thing is both the variants are the same, okay? So both the outside variant were same. We have already done May-June 2023 paper 42, okay? R variant, जो हम appear होते हैं. In Pakistan, paper 4 variant 2 होता है, तो जो हम what we appear for, we have already done. One question was on the investment appraisal, and one question I think was on budgeting or standard costing. I'll still confirm and send you, okay? With me following, clear on this? No problem? Guys, Yes. getting it? Clear? Okay, so what they are saying is that what we have is ADPLC. It makes one type of product only. Quickly follow very carefully. It makes one type of product, that is the demand for which is highly seasonal. The demand for which is very highly seasonal, and the sales manager estimates that demand in the coming months beginning December would be as follows. So this is the sales demand, okay? Getting it? In budgeting, this question is about budgeting, and you need to understand in budgeting you have to make trade payables budget, trade receivables budget. You can be asked to make cash budget. What is more common, sir? More common is being, you will be multiple times they ask cash budget. Matlab cash budget is very common as compared to the other budget, okay? Hello, अस्सलाम वालेकुम. अभी स्टार्ट हुई आ जाए. Yep, let's continue. Haji. So what I was saying, can you guys hear me? So what we need to understand, Yes. like production budget. Gigi bole. Can you guys hear me? Yes. Mic mute to me. So we have production budget, purchase budget. Okay, so these all the types of budget can be asked, but usually commonly क्या पूछा था, cash budget or income statement and those things. But सारे budget आने चाहिए, because in any paper they can ask any question. And what I said was, okay, one question will be easy on average, and one question will be medium difficulty level or can be hard difficulty level in paper 4. ठीक है? Getting it? Clear on this? अब ट्रेंड ये होगा, दो क्वेश्चंस तो आएंगे, उसमें से एक इजी होगा, एक नॉर्मली एवरेज होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन एक one might be tricky as well, okay? Clear on this? Hello, got it? So we Yes. have been given the sales demand unit, okay? Sales के units given है, how much will be sold in each respective month. Then we have, it was the policy of the company to maintain the inventory of finished goods at maximum 25% of the following month sale. So it was the policy of the company to maintain the inventory of finished goods at maximum 25% of the following month sales. Sometimes it was not possible. Sometimes it was not possible. Getting it? And information बहुत limited होगी, as you can see, बिल्कुल छोटी सी information है, and just have to quickly read it and quickly start the question. No time to waste. Sometimes it was not possible. What they're saying is sometimes it was not possible for the business to produce enough units a month both to meet the demand from customers and maintain the desired level of closing inventory. At these times, the business treating the meeting of demand as more important than maintaining the closing inventory. Very important, ठीक है? एक बहुत important statement है यहाँ पर. It's a tricky question. What they are basically telling us, we need to understand that at these times, the business treated the meeting of demand as more important than maintaining the closing inventory. So you are going to meet the demand that is more important to you as compared to maintaining the closing inventory, and that is why हम closing inventory को focus इतना नहीं करेंगे, हम demand meet करने के लिए focus करेंगे, and that's why they're saying the maximum number of units which could be produced in 1 month was 10,000. The maximum number of units that can be produced in 1 month was 10,000. Got it? Clear? Understood? Any problem? Any questions? Let me know. Clear. Clear? So what we have to do, if we look at the question, the first thing, for 7 marks, prepare the production budgets in units for each of the following months, January to April, okay? So you have to make the
you have to make the production budget. You have to make the production budget for each of the months, that is from January to April. Okay, from January to April, we have to make the production budget. What is production budget? That how many units you are going to produce in that respective month. Okay, with me following. So here we go. Yahan par, let's take it April here, so that if we need to do any more working, we can quickly do April. Make sure, do always try to make it like this, the way I'm doing it. Okay, getting it? Leave some space for writing. And because a lot of months will be related, so we need to understand. So it will be January here, February here, got it? March here, and April here. Understood? Clear? Guys got this? Understood? Okay. Yes. So how do you start with? Always remember, sir, we start with the sales units. So how much we have to sell in this? Okay, how much we have to sales, the units, number of units in this month. Okay, January, February, March, how much we have to get the sales done. Okay, with me following, clear on this? Understood? Yes. Okay, so let's write it down quickly. This is the first part of the question, and we have this thing here that is basically in January we have to do 6,000, 8,400. So 6,000 and 8,400. In January we have to make the sales of 6,000. In February we have to make sales of 8,400, right? January 6,000, 8,400 February, and what else? 12,800 in March and 11,800 in April. Okay, so 12,800 in March and 11,800 in April. Got it? So first you write down the sales units, that how much we have to make. Okay, getting it? Clear? Understood? Are you guys following? Understood? Any problem? Let me know. Any questions? Clear. Okay, any concerns, and let me know any problem in there. So we'll talk about. Guys got it? Understood? Clear? Any problem? Any Yes. questions? Let me know. Sales, Yes. we have to sell 6,000 units, 8,400 units in February. March is 12,800 and 11,800 is April. We have written down. We need to understand that the maximum number of units, students need to understand the maximum number of units which could be produced in 1 month was 10,000. Okay, the maximum number of units which could be produced is how much? 10,000. Okay, understood? Clear on this? Following everyone? So let's start. We already know it is the company's policy to maintain 25% of the following month sales as the closing inventory. Format क्या होता है? अगर आप let me write down the format as well, students. So it is basically opening inventory with me. ये मैंने already काफी जगह mention किया है, आपको notes में मिल जाएगा. Opening inventory, we add production in it. We subtract the closing inventory units, and we get the sales units. Getting it, guys? Units के लिए है. Everyone getting it? You opening inventory, add the production units minus the closing inventory units, and you get the sales units. With me, clear? Guys, both following? Everyone got this? Understood? So what we need to do, we are Yes. going to do the opposite. Sales, we are going to add the closing inventory units, sir. So you have to add the closing inventory units. Understood? Got it, guys? Clear? Hello? Closing inventory units. Getting it? Clear? Yes. Okay. So Gigi Bole, what's the question? Hello, yes, go on. What's the question? Yep. Go on, I'm listening. No, got it, everyone. So closing inventory units we are going to find. What is they are saying? They are saying, sir, closing inventory is 25% of the next month sales. So January ka 25% ले लेंगे for the next month sale. So that will be for the following month sale. Sorry, 25% of the following month sale is the closing inventory. So you're going to take in January, what will be the closing inventory, sir? In January, the closing inventory will be the following month sales ka 25%. Getting it, guys? Make sure read it properly and clearly. You need to understand it is the following month. So if you are in January, following month will be February. Just understand one and you will get it. If you are in January, the following month will be February. So it will be, sir, the following month, that is February, whatever the sales is, 25% of the inventory of the finished goods. Understood? Clear on this? So here we go. February is 8,400 units. You take out the 25% of it, and that will be 2,100. Okay, let's understand that 2,100 will be the closing inventory. 2,100 will be the closing inventory for what? Closing inventory for the January. Similarly, it will be March. February's closing inventory will be, sir, follow carefully my wordings. February's closing inventory will be 12,825%. That will be 3,200 units. Getting it clear? 3,200 units. Understood? And similarly,
for 11,825%, it will be something. For the March, it will be different as well. Are you guys getting it clear? Understood? Following? Yes. Okay, let's hold on up till here now. Next will be, because we are adding closing inventory, we are going to subtract what? Sir, you are going to subtract the opening inventory, right? And we will get the production units, right? Opening inventory, we are going to subtract. Are you guys following with me? Opening inventory, we are going to subtract. Clear on this? Following? Yes. Okay, so here we go. What we need to understand is, sir, we can produce maximum only 10,000 units. Okay, as they were saying, we can produce only 10,000 units maximum, and it will not be important to maintain the closing inventory when the time will come of meeting that demand. Are you guys getting it clear? Following? That was clear, right? We will focus on meeting the Yes. demand as compared to maintaining the closing inventory. जरूरी नहीं है कि 25% maintain की जाए. It's not compulsory. Okay, so we will look into that as well. So what we first need to understand कि हमें पहले opening inventories चाहिए होंगी, ठीक है? तो let's talk about closing inventory for January will become what? Opening inventory of February, right? Closing inventory of January will become what? Opening inventory of February. Understood this thing? Should be clear, right? Yes. So guys, got it. So 2100 will be here. And if you do it, 8400 plus 3200 minus 2100. So what we are getting is 9500. So in this month, we are easily able to meet the demand. Getting it, students? 9500, we are easily able to meet the demand for the month of February. Okay, how we will get this? Understand how we will get this. So understand that in December, you must have get the closing inventory by doing the January 25%. Are you guys getting it? So 6,000 into 25% of January. Closing inventory of December, whatever the closing inventory of December is, that will become the opening inventory of January. And that is why this is 1500. So we are meeting that demand here as well. Understood, students? Getting it clear? Is everyone Yes. following with me? Any Yes. problem? Let me know. Are you guys getting it? So 600, sorry, 600 plus 6,000, 6,600 is the production. Again, this is also less than the maximum. So we can easily have it, okay? Clear? Following? Everything clear? Yes. Guys, the production is lower than 10,000. So we are in safe zone. We just add the sales plus the closing inventory minus the opening inventory. I got 6,600. If anyone is still confused how I got this as 1,500, understand I'm following the pattern chain. Closing inventory of January is the opening inventory of February. Definitely the closing inventory of December will be the opening inventory of January. I'll repeat, closing inventory of January will be the closing inventory of December will be the opening inventory of January. Got it? And how will I get this? The same way, following month sales 25%. So December's closing inventory will be, sir, following month 25%. Are you getting it? Safa, clear? Everyone got it? No problem, no Yes. doubt. Now, No. the question that you guys should ask is that, sir, why haven't you done 11,800 to 25% of this? The reason is I can clearly see here. अगर मैं maximum 10,000 units produce कर सकता हूँ per month. Are you guys getting it? The maximum number of units which could be produced in 1 month was 10,000. Are you guys getting it? Are you guys following? The maximum number of units which could be produced in 1 month is 10,000. So if you look at this will be easy to satisfy, but it's clearly showing here कि जो मार्च और अप्रैल में सेल्स है, जितनी सेल्स कर रहे हैं उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते. Are you getting it? जितनी हमें सेल्स करने का हमने, क्योंकि everything is being budgeted ना, everything is being thought process here, right? The company managers are thinking कि मार्च में इतनी सेल कर देंगे, अप्रैल में सेल कर देंगे, करी नहीं है सेल कर देंगे. तो उस सेल्स को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन सिर्फ खाली 10,000 होती मैक्सिमम. सो दैट इज व्हाई आई स्टॉप्ड हियर एंड आई डिडंट रोट इट हियर कि इसका 11,800 का, बिकॉज हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम जैसे होता है हम कहते हैं कि हम इसको यहाँ पर थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, बट वहां चेंजेस नहीं कर सकते. आर यू गाइस गेटिंग इट? आर यू फॉलोइंग? अंडरस्टूड? Yes. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज स्टूडेंट्स, ये तो सेम रहेगा बिकॉज ये तो हमने फिक्स कर दिया कि 3,200 इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फेब्रुअरी. It will become the opening inventory of March. Okay, getting it clear? So it will become the opening inventory of March, but we need to understand कि हम इसका जो है वो नहीं ले सकते, और इसका लेंगे भी तो गलत आएगा. देखें, फॉलो करें. आप ले लो 11,800 का ले लो, 11,800 का 25% लो. It is coming 2,950 as the 25% of the following month sales, that is closing inventory, right? Getting it, guys? ये 25% है. So 2,950
closing inventory plus the sales units 12,800 minus 3,200. I am getting an answer that is 12,550. तो ये possible ही नहीं. Are you guys getting it? 12,550 is not possible to make production, make it हम 10,000 नहीं बना सकते. Are you guys getting it clear? So that is why the concept will come into existence that sir, because you cannot change. Follow carefully. ये आप change नहीं कर सकते because this is from the examiner perspective. You cannot change this. Otherwise, सारी पीछे figures change होंगी because it is coming from the previous month. Are you guys getting it? So what is left? Because of the question understanding, question says that at these times the business treats meeting the demand as more important than maintaining the closing inventory. So for the month of March, closing inventory 25% पे maintain नहीं होगी. Are you guys getting it? For the month of March, closing inventory will not be maintained at 25%. Understood? Clear on this? Guys, got it clear? Yes. सही है. So what will happen कि हम कहेंगे सर production units 10,000 ही रहेंगे, production के units 10,000 होंगे और closing inventory जो है हम opposite way में find करेंगे कि we have opening inventory. So sales units now will be subtracted by the production units and we'll subtract the closing inventory as well. So I'm getting 400. ठीक है जी. 400 will be the inventory now. ठीक है, तो सिर्फ only closing inventory 400 आ जाएगी. Are you guys getting it clear? Understood? Hello. Yes. And same will go here. This closing inventory will become the opening inventory of the next month. And as you can see, it's 11,800. अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आप try करना चाहो तो कर लो. Whatever the May, April के बाद में आता है, right? May is 9,600 falling month sales. Take out 25% of 9,600. Are you guys getting it? पहले आपने try करना है, सही है. पहले आपने ये judge करना है. Maybe change हो जाए शायद 10,000. So if this was the sales, that's why I said I leave always space in budgeting questions. I always leave space so that next वाला भी हम देख सकें. तो 9,600 is the sales unit. 9,600 is the expected sales for May. Any questions? Let me know now. तो ये 2,400 आ जाएगा. आप try करो कि अगर 2,400 add 11,000 और minus 400 तो क्या ये 10,000 से कम आ रहा है? 13,800 आ रहा है, which means ये भी नहीं possible. Are you guys getting it? मैं repeating my point. अगर ये दोनों figures में से 10,000 से कम आता फिर हम वही करते जैसे जो हमने यहाँ पर करा है. Guys getting it? अगर दोनों figures में 10,000 से कम आता तो हम फिर वही करते. Are you guys following with me? Clear? Yes. Hello. ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि वो हाई आ रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल नहीं होगा. दोनों में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% मेंटेन नहीं कर पाएंगे. दिस विल बी ऑल्सो ओनली 10,000 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस. So you can work it out how much is the closing inventory based on that. Okay, getting it, guys? 11,800 minus 10,000 and minus 400. So I'm getting 1,400 as the production is 10,000. Opening inventory is 400 and 12,800 is the sales. Yep. अच्छा, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे. Are you guys with me following? कि हम ये करेंगे कि हम इसमें जो है वो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो ये होगा. यहाँ तक तो सही है 2100 32 44 400. बट बिकॉज ये बजट व्हाट वी आर गोइंग टू डू बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस 10,000. आर यू गाइस गेटिंग इट? तो हम यहाँ पर सेल्स को चेंज कर देंगे. गेटिंग इट क्लियर? हम यहाँ पर सेल्स को चेंज कर देंगे कि हम कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कुछ भी नहीं ले रहे बिकॉज पहले 400 थी, हम इसको 0 कर देंगे. आर यू गाइस गेटिंग इट? क्लियर? Yes. इसको हमें 0 करना है. द रीजन इज कि हमें पहले डिमांड मीट करनी है, राइट? हमें डिमांड मीट करनी है. डिमांड मीट नहीं हो पा रही है. 11,800 हमारे देखें ना, अभी भी हमने नहीं कर पाए. 12,800 करना था लेकिन हमने 10,000 प्रोड्यूस करा है तो हम नहीं कर पा रहे. आर यू गाइस गेटिंग इट? क्लियर है? बात समझ आ रही है? Yes. हेलो. बट यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम डिमांड मीट करेंगे. तो 11,800 मीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, हम सब कुछ सेल आउट कर देंगे. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेल्स चेंज हो जाएगी इस केस में. तो अप्रैल की सेल्स चेंज होगी. दैट विल बी के सेल्स विल बी ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन. तो 10,000 प्लस 400 दैट इज 10,400 माइनस 0. So sales will be for April will be changed to 10,400. Understood? Got this clear? Yes. That's how the production budget will look like. Okay, it's a bit different and a bit tricky as well. The production budget, guys, got it clear? Move forward. Yes. Understood? Everyone Yes. is clear? Okay, make sure revise कर लीजिएगा. ठीक है. Now the next part is only theory for 2 marks. Out of our next after 7 marks, explain how the budgeted revenue for the 4 months from January April should be calculated. So they are asking us, they are telling us how the budgeted revenue for the 4 months from January to April should be calculated. So what we are going to do, it's simply that how will you make the budgeted revenue? Matlab they are asking how you should make the sales revenue budget. Are you guys getting it? So you just have to tell the examiner that the selling price per unit
how will you get the budgeted revenue? The selling price per unit, just multiply with the number of sales units. Getting it? Are you getting it? Budgeted revenue will be, how will you find the budgeted revenue? It will be budgeted revenue will be the number of units will be the demand. Are you guys getting it? इतनी demand होगी, सही है? Are you guys getting it? ये सब demand है, ये sales units नहीं है. These are basically demanding units. Are you guys getting it? Estimate that the demand in the upcoming months, this is the demand, that this will be the demand. तो हम कहेंगे कि हम already meet कर रहे हैं, हम जनवरी में डिमांड मीट कर रहे हैं, फरवरी में डिमांड मीट कर रहे हैं, मार्च में डिमांड मीट कर रहे हैं, लेकिन हम अप्रैल में डिमांड मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अप्रैल का जो वो है वो हम चेंज करना पड़ेगा. इट विल बी द डिमांड मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ओके, गॉट इट? मल्टीप्लाई की जगह आप लिख दें टाइम्स, मल्टीप्लाई की जगह आप लिख दें टाइम्स, टाइम्स इज द बेटर वर्ड. बजटेड रेवेन्यू विल बी द डिमांड टाइम्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट. सेलिंग, तो ये 1 मार्क मिल जाएगा. बजटेड रेवेन्यू विल बी द डिमांड टाइम्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, but taking into account the constraints, but taking into account, including taking into account that thing. Okay, getting it, guys? Taking into account the constraint, the demand constraint. Okay, the constraints. Got it? Clear? Understood? Yes. कि जहाँ पर constraint आ रहा है वहाँ पर अपना different revenue use करना पड़ेगा. सही है? Got it? Clear? Yes. या कंस्ट्रेन, या अप्रैल में जो कंस्ट्रेन आ रहा है उसको आप अप्रैल के बारे में भी लिख सकते हैं, या 4 लाइंस तो इसलिए आप राइट डाउन करें. गॉट इट? 9 मार्क्स आर डन, गाइस. गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टूड? मूव फॉरवर्ड. Yes. Someone saying there are a lot of noises I'm hearing. Is someone else as well there? Are you guys following? Hello, got it? Yes. Yes. Let me know any questions, any difficulty, तो I'll explain again. Guys, let me know. Any concerns? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि अप्रैल का, जिसने अप्रैल का पिक नहीं करा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है कि हम डिमांड मीट करें, तो हम जो है वो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे. दैट्स वाई कि हम, अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम 10,400 तो जा ही सकते हैं. अगर हम 11,800 नहीं कर सकते तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को इसलिए मैनेज करा बिकॉज सेल्स हो पा रही थी. आर यू गाइस गेटिंग इट? मैं फिर एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि जब हम मार्च में पहुंचे, जहां पर हमारे प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट स्टार्ट हुआ, आर यू गेटिंग इट? व्हेन वी रीच्ड मार्च, जब हमारा प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट स्टार्ट हुआ 10,000 का, तब भी हम इतनी सेल्स कर सकते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही थी 400. गेटिंग इट? वी वर एबल टू मीट द डिमांड एंड दैट इज वाई हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आई 400. बट जब हम अप्रैल में गए तो हम नहीं मीट कर पा रहे थे डिमांड, तो हमने कहा क्योंकि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने कहा कि अब क्या करते हैं, क्योंकि अब क्लोजिंग इन्वेंट्री को 0 कर देते हैं, तो ताकि हम एटलीस्ट जितनी मैक्सिमम डिमांड मीट कर सके वो हम कर लें. गॉट इट गाइस? क्लियर? सही है? नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज बेसिकली कि हमारे पास एक और 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, तो मेक श्योर वी हैव टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स हियर. कि व्हाट इज द थ्योरी क्वेश्चन हियर? फॉलोइंग विद मी. एट प्रेजेंट स्टोरेज स्पेस इज लिमिटेड. गेटिंग इट? कि एट प्रेजेंट the storage space is limited such that the maximum number of units which can be held in inventory is 3,200. Advise the directors of the company whether or not they should invest in a new larger store facility. Justify your answer. So make sure out of 7 marks, 1 mark is for the decision that do you want to go for it or you don't want to go for it. Okay? And 3 marks for writing positive about it and 3 marks for writing negative about it. Okay? Getting it? So at present, what they are saying, are you guys with me? At present, it is saying that the maximum number of units which can be held by the inventory is 3,200. So should they go for? So if they are investing, what are the advantages of investing in a? What are the advantages of investing in a new larger? Advantages of new larger store. What are the advantages of new larger store? Anyone? New larger storage. Advantages क्या होंगे कि your cost will be coming less. Okay, your maintenance cost, your warehouse will come less. Closing inventory is almost less than 3,200. 2,100 है, 3,200 है, 400 and 0 है. तो do you think you need it? I don't think we need it. Okay, already closing inventory कम storage है. Closing inventory इतना store नहीं करना है हमने. Closing inventory को store करने के लिए warehouse में 3,200 units सेल हो सकता है. Are you guys getting it? Yes. Yes. We can say कि अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ न्यू लार्जर स्टोर, मोर इन्वेंट्री,
मोर इन्वेंट्री कैन बी केप्ट। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मोर इन्वेंट्री कैन बी केप्ट, लोअर मोर इन्वेंट्री कैन बी केप्ट, मोर इन्वेंट्री कैन बी केप्ट, as well as low warehouse cost. Okay, although it will result in a cost. Okay, it would enable the business to build up their inventory prior to the times of more inventory can be kept for expected high demand. Okay, for unexpected high demand, कोई अगर unexpected high demand आ गई तो more inventory will be there. Okay, guys, following? Can I get response? Are you guys getting it? Yes. More inventory can be kept for the unexpected high demand. Okay, और फिर क्या होगा कि आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं इससे, लीडिंग टू अ लॉट ऑफ मोर सेल्स, लीडिंग टू सेल्स, कि आपकी सेल्स जनरेट होंगी मोर। और कोई आइडिया? लीडिंग टू मोर जनरेशन ऑफ सेल्स। देन नेक्स्ट, सेल्स लूज नहीं होंगी आपके, आप मोर सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, गेटिंग इट? फॉलोइंग गाइस? Yes. और क्या पॉइंट हो सकता है कि द बिजनेस वुड हैव स्पेस टू कीप एन इन्वेंट्री ऑफ दैट। तो बेसिकली अभी हम अच्छा, ये जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, इसमें आप इन्वेंट्री रख रहे हैं कि इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल्स कैन बी केप्ट एज वेल। अगर हम ये पॉइंट भी देखें तो इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल्स कैन बी केप्ट एज वेल। अपार्ट, जब आपका एक न्यू स्टोरेज आएगा तो आप उसको यूज कर सकते हैं ना, डिफरेंट इन्वेंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक को रखने के लिए। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन बी केप्ट, तो ये एक अच्छा हो जाएगा कि you get two benefits by opening a new larger storage facility. You will get more benefits because storage facility that will help out, or it will reduce the cost as well, reduce the risk. It will reduce the risk of theft. It will reduce the risk of the कि ये वो नहीं होंगे इजीली आपको अपने सप्लाई, अगर आप रॉ मटेरियल्स की सप्लाई रख सकते हैं तो आपको आपका जो रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क, हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेज हो जाएगा आपका, रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको रिलाई नहीं करना पड़ेगा सप्लायर पे कि वो डिले कर रहा है आपको रॉ मटेरियल्स ड्यू टू एनी एनी कोई किसी वजह से वो डिले कर रहा हो। तो ये बेनिफिट्स हैं। गेटिंग इट क्लियर है? हेलो? Yes. Yes. इसके अलावा आप डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे? इसको आपने मेक श्योर मैंने तो पॉइंट्स लिखे हैं, आपने इसको प्रॉपर नोट डाउन नोट्स में लिखना है और पूरा एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स आपको फॉरवर्ड फॉर्म में लिखने हैं, उसके बेनिफिट में लिखने हैं कि अगर न्यूज लार्जर स्टोरेज फैसिलिटी बनाए तो क्या होगा। तो डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि एक तो दे विल बी एन इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, अलॉट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट। सिंपल सी बात है कि अगर आप न्यू स्टोरेज बनाएंगे, इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ड्यू टू स्टोरेज फैसिलिटी, इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, गेटिंग इट? और क्या पॉइंट्स है किसी को? इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट। करंटली करंटली जो मैंने पॉइंट डिस्कस करा कि ये डिसएडवांटेज है, करंटली इन्वेंट्री इज ऑल इन्वेंट्री करंटली इन्वेंट्री इन ईच मंथ is already less than 3200. Getting it? तो spare capacity है अभी भी। Currently inventory in each month is 3200 or less than in each month is less than 3200. Guys, follow करें? Therefore spare capacity is available. Therefore spare capacity is available. Getting it, guys? Clear है बात? Yes. Yes. Therefore spare capacity is available. और कोई पॉइंट्स डिसएडवांटेज बताएं? मतलब अभी जगह है इतनी कि और इन्वेंट्री रख सकते हैं, उसी के अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू फैसिलिटी कुड एक्सीड द प्रॉफिट। बिल्कुल, कॉस्ट इंक्रीज होके ऐसा ना हो कि प्रॉफिट ही रिड्यूस हो जाए इसकी वजह से। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है? कैश फ्लोज, ये हो सकता है। गेटिंग इट? अच्छा, ये डिसएडवांटेज भी है। जितनी ज्यादा अगर हम ये स्टोरेज फैसिलिटी बना लेते हैं तो जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी तो क्या प्रॉब्लम्स, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री के प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं आप कि मोर इन्वेंट्री leading to theft, more chances of fraud, theft हो जाता है। more inventory being held might lead to, ये सारे आपने प्रॉपर पॉइंट्स लिखना और एक्सप्लेन भी करना है। more inventory being held might lead to greater chances of theft. Getting it, guys? ये अच्छा पॉइंट है, might lead to chances of theft. डैमेज भी हो सकते हैं, राइट? अगर लिक्विड चीज होती है तो डैमेज होती है, राइट? आपने देखा होगा कि वेयर हाउस पूरे खराब हो गया, उसमें चीजें सड़ गई। गेटिंग इट? तो माई लीड टू चांसेस ऑफ थेफ्ट। ओके, डैमेज्ड, स्टोलन, चोरी भी हो सकता है। आर यू गाइस विद मी? फॉलोइंग स्टोलन, और वी कैन से दैट बिकमिंग ऑब्सोलीट। ओके, और बिकमिंग ऑब्सोलीट मतलब फिनिश हो जाए, बिल्कुल इनएडिक्वेट हो जाए, काम कहीं ना रहे। ठीक है, गेटिंग इट? तो आपने ये पॉइंट्स लिखने। हेलो, आर यू गाइस Okay. गेटिंग इट? एंड देन आई थिंक that my decision will be the directors should not go for it. My decision is basically more towards disadvantage. The directors should not invest, and my reason is simply this thing, on practical basis कि already आप अपनी sales units को बढ़ा नहीं पा रहे because of the constraints, production constraint. आपको अपनी production capacity पे काम करना चाहिए। सबसे important आपको production capacity पे काम करना चाहिए कि आपकी जो factory है
वो ज़्यादा बना सके, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट हाईली सीजनल भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर्स शुड नॉट इन्वेस्ट in new larger storage facility because in new larger storage facility because the current one is not being fully utilized because the current one is not being fully utilized, ठीक है। तो एक आपने स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें आपने डिसीजन बताना है। मेक श्योर मैंने कल ओ लेवल स्टूडेंट्स को भी समझाया ये कि आपने एक तरफ डिसीजन होना है, बायस होकर डिसीजन देना है। या तो आप एग्री करेंगे या आप डिसएग्री करेंगे, लेकिन दोनों के बारे में आपने लिखना है। लेकिन ऐसे एंड में ये ना हो कि डिपेंड्स और वाला इकोनॉमिक्स वाले आंसर्स नहीं दे सकते इसमें। मेक श्योर आपने या तो एग्री करना है या डिसएग्री करना है, बिकॉज 1 मार्क उसका है फ्री, 3 मार्क्स इसके हैं। मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने आपको थ्योरी भी लिखना सिखा दिया कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ट्राई करना, प्रैक्टिस करें, मुझसे चेक करें थ्योरी, और ट्राई टू गेट 5 मार्क्स एटलीस्ट इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। 5 to 6 मार्क्स जरूर ले, सही है। बिकॉज द करंट वन इज नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज। अंडरस्टूड, क्लियर है? कैन आई गेट रिस्पॉन्स? Yes. Yes. ठीक है जी। तो ये हो गया। तो हमने इसमें देखें, अगर हम अभी तक देखें, हमने सिर्फ 7 मार्क्स का न्यूमेरिक्स किया है, बाकी इसने 9 मार्क्स की थ्योरी पूछ लिया, which makes it how much 16 मार्क्स, ठीक है। तो अब 9 मार्क्स स्टिल लेफ्ट, तो अगेन 7 मार्क्स का न्यूमेरिक्स आ गया और फिर 2 मार्क्स की एक और थ्योरी आ गई। तो वेल लेट्स डू दैट एज वेल, ठीक है। क्लियर हो गया? लेट्स स्टार्ट। अंडरस्टूड है? Yes. पहले ऑलवेज रिमेंबर, पहले खुद आंसर लिखें, फिर मार्किंग स्कीम से पॉइंट्स रीड करें उनको, फिर उनको भी नोट डाउन करें और फिर रिवाइज करें उस क्वेश्चन को कि अगर ऐसा क्वेश्चन वापस आता है थ्योरी रिलेटेड, इन्वेंट्री सॉरी व्हाट आई मीन इज के इन्वेंट्री रिलेटेड, स्टोरेज वेयर हाउस रिलेटेड, तो आपको पॉइंट्स याद हो कि हाँ सर ने कहा था कि अगर इसका एक नया स्टोरेज बनेगा तो उसमें चांसेस ऑफ थेफ्ट हो सकते हैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा ना हो कि लॉस में चले जाएं उस पर। तो आप ये सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज होगा कि ज्यादा इन्वेंट्री रख सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई तो इजीली मेट कर लेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी को और भी कामों के यूज कर सकते हैं, अनयूज मटेरियल, अदर अदर थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल होकर आंसर देना है गाइस। गॉट इट? क्लियर? मूव फॉरवर्ड। Yes. Yes. The next thing is what we have is basically each unit requires 2 kilos of direct materials, ठीक है। We have to make the budget now. Again, each unit requires 2 kilos of direct materials, and the production manager expect that this material will cost. So ये different है, the production manager expects that this material will cost $6 per kilo in January and $7 per kilo. There is no inventory of direct materials is kept. No inventory of direct material is kept. Then half of the purchases are paid for in the month of the purchase. Half of the purchase उसी month में pay करते हैं. Understand the clauses, okay? Understand the clauses. Half of the purchase are paid in the month of the purchase. The remainder are paid for in the following month. Remainder are paid in the following month. We have to prepare the trade payables budget for each of the months, only February and March. देखिए, always remember वो information ज़्यादा months की देगा. Information उसने पूरे 6-7 months की दी है. Are you getting it? 6 months की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उसने प्रोडक्शन बजट जो बनवाया वो खाली 4 months का बनवाया, लेकिन इन्वॉल्व सबको करता है। अगर आपसे जनवरी से अप्रैल तक का बजट मांग रहा है, अगर आपसे वो जनवरी टिल अप्रैल का बजट मांग रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे आगे पीछे का भी जरूर पूछेगा। वो आपसे अकोमोडेट करना पड़ेगा आपको। गेटिंग इट? सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है कि वो बजट तो खाली फेब्रुअरी मार्च का मांग रहा है। आर यू गाइस गेटिंग इट? बजट फेब्रुअरी मार्च का मांग रहा है। आर यू गाइस विद मी? वी हैव टू मेक द ट्रेड पेबल्स बजट for each of the February March month, but we need to understand that we have to go for previous as well. Include the balance of trade payables at the beginning and end of the each month. Assume that the production is still as your answer to part A. Okay, got it? Clear? Understood? Yes. अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Give me 1 minute, इसको रीड कर लें आराम से, फिर हम करते हैं, सही है। ओके जी, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल हैपन, पहले तो हमने ये देखना होगा कि भाई हमने इसको बजट बनाना कैसे है, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमने कितनी परचेजेस करी हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग। अगर आपको पहले आपको बताना चाहिए कि फॉर्मूला फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मेट यहाँ कर लेते हैं ताकि आगे भी स्पेस हो। फेब्रुअरी एंड मार्च, ठीक है। फेब्रुअरी मार्च यहाँ आ गए। आर यू गाइस विद मी फॉलोइंग? पहले आप तो कॉलम्स बना लें, तो फेब्रुअरी हो गया। अंडरस्टूड? हेलो? और एक हो Yes. गया मार्च, सही है। तो आपने ये देखना है कि आपको पहले कितने पे करने थे, फिर नेक्स्ट मंथ कितने पे करने। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग आपके कितने बैलेंसेस हैं, आपने स्टार्ट ऑफ द मंथ कितना पे करना है। इजी होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंसेस, फिर आपने जो पूरी मंथ पे परचेज किए, फेब्रुअरी में कितनी परचेजेस की हैं, और सिमिलरली आपने पेमेंट्स कितनी करी हैं। और पेमेंट्स कैसे करी है? पेमेंट्स हमने 2 वेज में करी हैं। एक करंट मंथ में पेमेंट की है,
और एक फॉलोइंग मंथ में पेमेंट किया। अंडरस्टूड? गेटिंग इट? हेलो? परचेजेस Yes. कितने और फिर आपका कोई अगर डिस्काउंट नहीं है तो इजी है कि आपके क्लोजिंग बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। सही है? अंडरस्टूड गाइस? क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट Yes. करते हैं। एवरीवन गेटिंग इट? तो पहले देखते हैं कि फरवरी में कितने परचेज की होगी। अगर हम देखें तो फरवरी की जो प्रोडक्शन है वो सिंपल फरवरी में प्रोड्यूस करने थे 9500 यूनिट्स। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes. Yes. प्रोड्यूस करने थे 9500 यूनिट्स। तो 9500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 2 किलो ईच। इफ आई हैव फॉलो वेरी केयरफुली, इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द 1 यूनिट आई नीड 2 किलोस। तो अगर 9500 यूनिट्स के लिए कितने चाहिए होगा? 9500 यूनिट्स के लिए मुझे 2 किलोस चाहिए होंगे। तो 19,000 तो वो आ गया। गेटिंग इट? 19,000 वो आ गया। 19,000 इज द रॉ मटेरियल्स। आर यू गाइस गेटिंग इट? अगर इसको यहाँ वर्किंग कर लें कि परचेजेस कैसे आ रही हैं, पहले परचेज की वर्किंग कर लेते हैं। आर यू गाइस विथ मी? कि वर्किंग Yes. नंबर 1 के परचेजेस की वर्किंग कैसे आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई 9500 यूनिट्स फरवरी में प्रोड्यूस होने थे, तो विल हैव यूज 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज। तो ये हो गया सर 19,000 केजीज। ये 90 किलोज में आ गया। सही है? कि एक यूनिट को अगर दो, इफ 1 यूनिट इज टेकिंग 2 किलोज, तो 9500 यूनिट्स विल टेक 19,000 किलोज। एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट 19,000 किलोज यूनिट्स, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ विच $7 पर किलो, क्योंकि वो फेब्रवरी के बाद जो है, जनवरी में $6 कॉस्ट थी, फेब्रवरी में $7 कॉस्ट। अंडरस्टूड? तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, $7 कॉस्ट थे। क्लियर ऑन दिस? तो मस्ट बी दिस थिंग 133,000। ठीक है गाइस? गॉट इट? होल्ड ऑन, द अजान इज Yes. गोइंग ऑन। Yes, is this clear? Got this? Any problem, anyone? Guys, got it? Clear on this? Yes. First thing is important कि how you are going to make the trade payables budget. So you need to understand कि you have to write down how many purchases you made in the February, how much payments you have made in February, and the opening closing balances, at how much you owe at the start of the month and how much you owe at the end of the month. So ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आपने ये निकाल लिया तो मार्च की परचेजेस भी निकाल लेते हैं। सिंपल, राइट? मार्च की प्रोडक्शन क्या होगी? मार्च में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग इट? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हेलो? अंडरस्टूड? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे मार्च में। 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? तो 20,000 केजीज हमें चाहिए होगा गाइस। और 1 kg कॉस्ट $7 फ्रॉम फेब्रवरी ऑनवर्ड्स। आर यू गाइस फॉलोइंग? तो इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी $140,000 परचेजेस। आर यू गाइस विद मी फॉलोइंग? तो इनके भी Yes. मार्क्स होंगे। Yes. ये क्लियर है? प्लीज डिस्कस करें जल्दी से। इस फिगर में प्रॉब्लम है कोई? No. हेलो? ओके। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, अब पेमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है? तो ओनली फोकस ऑन फेब्रवरी। ठीक है? ओनली फोकस ऑन फेब्रवरी बिकॉज फेब्रवरी इज इजी। व्हाट विल हैपन इन फेब्रवरी? फेब्रवरी में हाफ ऑफ द परचेजेस, दैट इज 133,000 एंड 140,000, हाफ ऑफ द परचेजेस। तो फेब्रवरी में जो 133,000 सर हमने फेब्रवरी में जो हमने परचेजेस करी, उसका हाफ जो है वो उसी मंथ ऑफ परचेज में पे कर देंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू सिंपली, दैट्स 133,000 डिवाइडेड बाय हाफ विल बी 66,500। वो यहीं पर पे हो जाएगा इसी मंथ में। गेटिंग इट गाइस? करंट मंथ में पे हो जाएगा। अंडरस्टूड? रिमेनिंग कब पे होगा? रिमेनिंग कब पे होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मंथ में, राइट? सो रिमेनिंग जो है 66,500, हाफ हाफ
66,500 paid in the following month. What is the following month for February? The following month for February is March. Understood? इतना सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? बिकॉज डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट आएगा तो इशू आ सकता है, ठीक है, उसका भी कोई क्वेश्चन देख लेंगे, बट ये इजी है, ठीक है, देख लें, सिंपल है। जो फरवरी में परचेज करा हाफ उसी मंथ में पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ इन सिंपल वर्ड्स के फरवरी में ही पे कर रहे हैं हाफ। अबाउट द रिमेनिंग वो मार्च में पे कर रहे हैं, तो वो मार्च में कर दिया, फॉलोइंग मंथ हाफ। ये क्लियर है? पर्पल कलर, गॉट इट? अंडरस्टूड? हेलो? Yes. Yes. तो अब मुझे जिसमें मार्च का क्या होगा, मार्च में कितना, मार्च में क्या करेंगे, मार्च अब से अब आप ये पैटर्न फॉलो करते रहे। सर मार्च की सेल्स इज 140,000, तो हाफ ऑफ द विल बी पेड इन दिस, तो कितना पे कर देंगे जल्दी से? कम ऑन गाइस, प्रेयर्स टाइम, जल्दी। कब पे कर 70,000. देंगे? 70,000, एक्सेलेंट। 70,000 मार्च के अंदर ही पे कर देंगे, और रिमेनिंग 70,000 कब पे करेंगे? April. लेकिन वो बनाना ही नहीं हमने, ठीक है, तो वरना यहाँ आ जाता, सही है। अंडरस्टैंडिंग हुई कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, गेटिंग इट क्लियर? सो नाउ इफ यू गेट द पैटर्न एंड अंडरस्टैंड दैट कि 70,000 रिमेनिंग अप्रैल में पे करने थे, तो थिंक अबाउट इट कि ये कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसका अलग से एक मार्क होगा। इसके तो मार्क्स होंगे 1 2 3 4 मार्क्स होंगे इनके, बट इसका भी एक मार्क होगा। तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे फॉलोइंग मंथ है तो इसका मतलब ये हुआ होगा, जैसे मैंने कहा कि वो हर चीज से लिंक करते हैं, तो जनवरी का जो परचेजेस होंगी, जनवरी की परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। उसका करंट मंथ तो करंट में आ गया होगा, लेकिन फॉलोइंग मंथ वाला जो है वो फरवरी में आ रहा होगा। अंडरस्टूड? तो एक और वर्किंग करनी पड़ेगी। आर यू गाइस गेटिंग इट विथ मी? फॉलोइंग, तो वर्किंग नंबर 2 जो Yes. है वो फरवरी के लिए करनी पड़ेगी, सॉरी जनवरी के लिए करनी पड़ेगी। सेम वे, इट्स जस्ट कि थोड़ा आपने टेक्निक देखनी कि प्रोडक्शन यूनिट्स वर 6600, सर जनवरी के लिए 6600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 किलो, सर 6600 into will be sir 13,200 kgs as the materials required। और इसका जो रेट था, प्लीज मेक श्योर रिमेंबर द क्वेश्चन एट द बैक ऑफ माइंड। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मिस्टेक 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे जल्दी से, लेकिन वो 6 था। जनवरी में जो मटेरियल परचेज करेंगे उसके $6 पर किलो कॉस्ट थी, तो ये $6 से मल्टीप्लाई होगा, माय डियर स्टूडेंट्स। गेटिंग इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes. हेलो, Yes. क्लियर हो गई बात? मैं प्लीज जल्दी जल्दी डिस्कशन। गॉट इट? अंडरस्टूड? Yes. तो ये क्या हो जाएगा, 13,200 into 6, that will be 79,200। दिस इज हाउ मच द परचेजेस विल बी फॉर द जनवरी। और इसका हाफ जो है वो आप पे करोगे इन द मंथ ऑफ फरवरी, दैट इज 39,000, जो कि मैच करना चाहिए, ठीक है, 39,600 मैच करना चाहिए, तो दैट विल बी 39,600। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अंडरस्टूड? तो ऑलवेज Yes. रिमेंबर, कभी ये एक टेक्निक भी है, टिप भी है, कभी भी सर अगर पेबल्स बजट आ जाए या रिसीवेबल बजट आए, पहले आप ये सॉल्व करोगे मिडल ऑफ द थिंग्स, ठीक है। अब आप सिंपली मुझे, अब आप ये खुद निकाल सकते हो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बाय आर्ट सब्ट्रैक्टिंग। लेट मी नो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है फॉर फेब्रुअरी। तो इन सिंपल वर्ड्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेब्रुअरी मींस कि एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी व्हाट यू हैव टू पे, व्हाट यू आर ओइंग। मतलब ये जो पर्सन था ये कितना ओ करता है, रवि जो भी नंबर नाम था इसका, हाउ मच दिस पर्सन ओज टू द, तो हाँ कितना वो करता है। फरवरी के स्टार्ट में इसने क्या क्या पे नहीं करा, फरवरी के स्टार्ट में इसने क्या नहीं पे किया था, फरवरी के स्टार्ट में इसने रिमाइंडर ऑफ द जनवरी खाली पे नहीं करा होगा। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो जाएगा कि जो आपने यहाँ निकाला होगा वही आप यहाँ वर्किंग नंबर 2 शो कर दें कि, क्योंकि ये तो आप इस महीने पे करोगे ना, 39,000 आप इस महीने पे करोगे, तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ वो आपके ऊपर ओइंग होगा कि आपने ये नहीं पे किया था। अंडरस्टूड? क्लियर है बात? Yes. तो मुझे बताइए कि मार्च के स्टार्ट में ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कि जो फरवरी का आपने हाफ नहीं पे करा। गेटिंग इट? जो फरवरी का आपने हाफ नहीं पे करा वो मार्च के स्टार्ट में ओपनिंग बन जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर है बात? Yes. सही है। अब आप ये कर लें, देखो खुद ब खुद डायरेक्टली मैच भी करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, इस पूरे चैप्टर में जो किसी का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बनता है, तो ये डबल चेक भी हो जाएगा। अगर आप डबल चेक भी करना चाहें डबल चेक हो जाता है ये। तो यहाँ पर आप निकाल लें क्लोजिंग बैलेंस कि सर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ 39,600 पे करने थे कंपनी को, इस महीने परचेजेस करी 133,000 की, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 39,600 प्लस 133,000 ऐड हो गए। बाकी सर पेमेंट्स किए हैं 66,500 माइनस 39,600, so we are getting sir the closing balance for the next month of March 66,500। ये नहीं पे करा, और उसका आप निकाल लें कि नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा। मार्च में ओपनिंग में 60,500 नहीं पे करा था, 140,000 सर आपने ऐड कर लिया, माइनस 70,000 माइनस 66,500, तो ये आ गया 70,000 जो कि हमने मार्च के एंड में पे नहीं करे। अंडरस्टूड? Yes.
जो कि अप्रैल का ओपनिंग। तो ये क्लियर हो गया, ये फिनिश हो गया, ठीक है। मेक श्योर वर्किंग्स दिखा दो जितनी पॉसिबल हो, जरूर वर्किंग्स दिखा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर ऑन दिस? किसी को डाउट है प्लीज डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, पूछे। 23 मार्क्स आर डन। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, और जैसे जैसे हमारे पेपर्स कंप्लीट होते रहेंगे मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ। बल्कि मैं एक पेपर कंप्लीट हो गया हमारा, हमने सारे 2021 भी करने, 2022 भी करने, ऑल वेरिएंट्स 2023 भी करने, तो मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। हमने एक दो पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो मेक श्योर आप लोग उससे हेल्प ले लें, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा उसको, खास तौर पर 2023 के जरूर रिवाइज करें सारे वेरियंट्स। अभी फरवरी मार्च भी करा दूंगा 2023। द डायरेक्टर्स, hello, got it? Everyone clear? The directors are considering asking the company's supplier to introduce a cash discount देखा of the payments made in the month के discount आ सकता है क्योंकि it's part of the syllabus. The directors are considering asking the company's suppliers introduce a cash discount of 4% on payments made in the month of purchase. Explain how this change would affect the budgeted statement of profit and loss. How this change, वो खाली पूछ रहे हैं कि वो देखें, वो एक्सप्लेन वो नहीं मांग रहे। यहाँ पर इजीली पूछ सकते थे कि इसको वापस बनाओ, गेटिंग इट बचिया। इजीली पूछ सकते थे कि सर वापस बनाओ, बाय चेंजेस हमने करा है ना, रिवाइज बजट बनाया वो करो। लेकिन वो ये नहीं पूछ Yes. रहा, वो कह रहा है खाली एक्सप्लेन कर दो कि किस तरह अगर कैश डिस्काउंट इंट्रोड्यूस होगा, विच मीन्स के सप्लायर क्या कर रहा होगा, हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे होंगे। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? प्लीज अंडरस्टैंड, सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है तो हम रिसीव कर रहे हैं बिकॉज हमने उसको पेमेंट करनी है, तो हमें वो डिस्काउंट दे रहा है अर्ली पेमेंट पर। जल्दी पेमेंट डिस्काउंट मिलता ही कब है सफा? गेटिंग इट? कैश डिस्काउंट मिलता कब है? अर्ली पेमेंट्स पर, ठीक है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? अर्ली पेमेंट्स पर। तो अगर हम फॉलोइंग मंथ में पे कर, सॉरी करंट मंथ में पे कर देंगे, फरवरी जिस महीने परचेज किया उसमें 50% पे कर रहे हैं, उसमें अगर 4% डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत बेनिफिट होगा। तो व्हाट वी कैन सिंपली से हियर इफ, सिंपली से हियर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये होगा कि द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल इंक्रीज बाय द डिस्काउंट रिसीव। ओके, डिस्काउंट रिसीव से इंक्रीज होगा, ठीक है, द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक तो उसके अंदर मेक श्योर कि किसी ने अगर डिस्काउंट अलाउड लिखा तो वो गलत हो जाएगा, सही है। गेटिंग इट गाइस? फॉलोइंग? ये पता होना चाहिए कि Yes. इसमें डिस्काउंट अलाउड होगा, सही है, क्योंकि आपका सप्लायर आपको दे रहा है। द बजट आपने इस तरह स्टार्ट करना है, एक मार्क इसका होगा द बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस will have discount receive, will have discount receive and an increase in profit. Okay, we'll have an entry for discount receive, we'll have an entry of discount receive under other incomes. आप लिख दें कि discount receive कहाँ आता है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। in other incomes which will increase the profit, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना कॉमन सेंस ये है कि it will increase the profit, ठीक है। और which will increase the profit, you can say that, which will increase the profit. Getting it clear? Following guys? Yes. Yes. समझ आ गई बात? अंडरस्टूड? ठीक है जी, Yes. क्लियर है? Yes. सही है। which will increase the net profit, which will increase the net profit, okay, final profit। लेकिन देखें, याद रखें, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ सेल्स और बजटेड जो सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे आता है तो ये अफेक्ट नहीं होता, सही है। ये मेक श्योर पॉइंट है, शायद ये भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तो अंडरस्टैंड करें कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, जो आपकी बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट होता है, वो अफेक्ट नहीं होता, उसके नीचे वाला पार्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड, बट दूसरा वाला अफेक्ट नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है, ये जरूर ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अंडरस्टूड? दैट्स वाई Yes. इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। अभी मैंने ये खुद लिखा है, ठीक है, जो रेड में मैंने खुद लिखा है, और मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जब मैंने मार्किंग स्कीम देखी तो उसमें ये पॉइंट भी लिखा था, तो मैंने इसलिए ऐड ऑन कर दिया। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपने कैसे करना है, आपने पहले खुद लिखना है जो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। गेटिंग इट? जब आपने खुद लिख लिया, फिर आपने या तो मुझसे चेक कर लें या खुद चेक करें विद द मार्किंग स्कीम, और देखें कि आपने कितने पॉइंट्स मिस आउट करें, कितने पॉइंट्स आपने लिखे। तो उसके हिसाब से अपने आपको मार्क्स दें, और जो पॉइंट्स आपने नहीं लिखे थे उनको भी आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपको याद भी रहेगा और आगे फ्यूचर में आपको क्लिक भी हो जाएगा माइंड में कि ऐसा पॉइंट भी लिख सकता था मैं, ठीक है। क्लियर? Okay. Yes. Understood? Any questions, any problems? So with this, ये question complete हो गया। We'll continue from here, ठीक है। Next question we'll do of paper 3, ठीक है। paper 3 का कुछ chapter से करेंगे, ठीक है। तो सही है। Understood? Clear? Yes. Yes. Okay जी, ठीक है। तो if you have any concerns of any chapter के, so paper 3 में ये difficult लगता है, वैसे तो हम IAC difficult है, company difficult है, तो उसके ज़्यादा questions करेंगे, लेकिन और भी chapters जो है manufacturing, non club accounting, वो भी revise कर लेंगे, ठीक है जी। Ratios, okay, understood? Yes. Yes. Okay, thank you, take care.